Mount Litra Z School organizes blood donation camp. Mount Litra Z School, in collaboration with Surat Raktdan Kendra, organized a life-saving blood donation camp inaugurated by Surat's mayor, Mr. Dakshesh Mawani. The camp was actively managed by the students as part of their Seva activity, showcasing their leadership and organizational skills. Teachers guided and supported the students throughout, ensuring smooth execution. The mayor appreciated the efforts of the school, encouraging students and donors to contribute to this noble cause. હું રિતેશ તવાલા, ચેરમેન માઉન્ટ લીટા સ્કૂલ સુરત. આજે અમારા અહીંયા બ્લડ કેમ્પનું આયોજન થયું છે. તો એ બ્લડ કેમ્પ અમારા 9th અને 10th સ્ટુડન્ટ્સ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યું હતું. આજે ખૂબ સારી રીતે આયોજન થયું છે અને એ પ્રોપરલી દરેક વસ્તુનું આયોજન વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. પ્રોપરલી સમજીએ તો જે ચીફ ગેસ્ટ તરીકે મેયરશ્રીને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા તે પણ અમારા સ્ટુડન્ટ દ્વારા જાતે કરવામાં આવ્યું હતું. એટલે આ એક સ્ટુડન્ટ્સના માટે એક નવું ઇનિશિયેટિવ હતું અને એમને ખૂબ સારી રીતે પાર પાડ્યું છે. ખૂબ સારું ફીલ થાય છે કે આજે 9th 10th છોકરાઓ કદાચ એમની ઉંમર 14 થી 16 વર્ષની વચ્ચેની હશે. આજે જો 14 થી 16 વર્ષના બાળકોના અંદર આ પ્રમાણના વિચારો, આ પ્રમાણેની ચેરિટીની ભાવના એમના મનમાં આવતી હોય છે, એ ખૂબ સારી વાત છે. એ જોતે એવું લાગે છે કે આ સ્ટુડન્ટ્સનું ફ્યુચર ખૂબ બ્રાઇટ છે. We are the members of Mount Litra Z School and we welcome you to this blood donation camp today. Actually, under this NEP 2020 and CBSE, we have this Seva activity which is done every month over here. So the students started with the act of kindness where they were feeding with the dogs, stray dogs, the birds and everything. Then they also had a gratitude where they were giving a thank you cards to all. They also went to Gaushala also, and there were many other activities. So this one, the activity is blood donation, where the students themselves have done this and executed the activity very beautifully, where we have 200, 300 plus and still continue going on with the parents of the blood donation. So the students have worked hard a lot. I think this brings the society together, the school, the parents and everyone together, where the act of the kindness where is shown very beautifully from the parents, and they have donated their blood. The mothers and the fathers all are also very excited where we can see them over here. So thank you so much, and thank you CBSE, thank you NEP 2020 where they are instilling this good values among the students over here at this age. Thank you so much. Seva, social empowerment through work, education and action. We, the Seva warriors of Mount Litra Z School, decided to save some lives. So, for that today, we organized a blood donation camp in which we invited the mayor of Surat city, Shri Dakshesh Bhai Mawani. Also, the students of grade 3, 4 and 5 made invitation cards for their parents. The students of grade 9th and 10th organized the event completely, and some students even coordinated with their parents and asked them to come and donate blood. Also, fun fact, one bottle of blood can save up to 3 lives. So donate blood wherever and whenever you can. Thank you. इस कैंप में पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे स्कूल ने पूरा हम पे ट्रस्ट करके हमने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है इधर. और जैसे कि हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और यहाँ पे अपनी सोसाइटी के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य करेंगे. और ये देख के मेरे को इतनी खुशी हुई है कि जब मैं हर लोगों को ब्लड डोनेट करते हुए देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि काश मैं भी दे पाता ब्लड. इस कैंप में पार्टिसिपेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में द एफर्ट्स वी मेड ऑन ऑर्गेनाइजिंग दिस कैंप आर प्राइसलेस. द एक्सपीरियंस वी गेंड, जो हमने सीखा है इस कैंप ऑर्गेनाइज करने से, जो हमने सब बच्चों को मोटिवेट किया, सब पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि ब्लड डोनेट कीजिए. इट्स अ गुड वे ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ સોસાયટી. જ્યારે લોકો બ્લડ ડોનેટ કરતા હતા ત્યારે એમના મનમાં જે બીજાને હેલ્પ કરવા માટે જે ફિલિંગ હતી એ દેખાતી હતી. પોતાના સ્વાસ્થ્ય પર બહુ ધ્યાન ના દઈને જે સમાજ માટે કાર્ય કરે છે એ જોઈને મને ઉત્સુકતા આવી અને આ સેવા કમ્યુનિટીનો ભાગ બનીને મને બહુ ખુશી થાય છે. Proud to participate in this camp, even though I cannot donate my blood, but still I am so proudful of my school and feel so proud that
our school is organized in this camp, and our mayor has come to this school to donate blood and to do all these activities and to make us feel proud and happy. Our small efforts can make a big difference, not in a one night or one day, but one day will come when this society will change and everyone will be doing a selfless service. माउंट लिटरा जी स्कूल के अंदर आज सेवा एक्टिविटी के अंदर क्लास 9 और 10 के बच्चों ने ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। सूरत रक्तदान केंद्र के संपर्क में आने के बाद बच्चों ने पूरी प्लानिंग के साथ आज ये ब्लड डोनेशन कैंप पूरा यहाँ पे आयोजन किया और बहुत खुशी की बात है कि इस जनरेशन के बच्चे खुद ये फील करते हैं कि ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है जहाँ पे हम लोगों को करीब लाए और ऐसा कोई एक नेक काम करें। तो माउंट लिटरा जी स्कूल के लाइफ में आज ये ऐसा दिन है जब हमने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। और खुशी की बात तो ये भी है कि सूरत के मेयर श्री दक्षेश भाई मावानी भी इस अवसर पे यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर द एंटायर स्कूल कम्युनिटी। देखिए, करंट ट्रेंड की अगर बात करें तो पढ़ाई का महत्व सिर्फ और सिर्फ बुक से संबंधित नहीं रहा है। अगर आज की डेट में देखें तो एक बच्चे को बाहर सक्सेसफुल होने के लिए इन सब एक्टिविटीज का भी करवाना या करना बहुत ज़रूरी है। तो जब बच्चे जिम्मेदारी लेकर के ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो एज अ प्रिंसिपल मुझे ये देख करके बहुत खुशी होती है और मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज स्कूल में होती रहे, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे सारी चीज़ें सीखते हैं। डेफिनेटली वो तो बच्चे ही बता पाएंगे, लेकिन यस, एज अ प्रिंसिपल जो एक स्कूल का मेरा जो एम था कि बच्चे सोशल सर्विस क्या है, क्यों ज़रूरी है और आज इंसान ही इंसान के काम आता है, ये दिमाग में रख करके ऐसी एक्टिविटीज उन्होंने जो एक्टिविटी आज की है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि बच्चे सोशल सर्विस के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा है और ये आगे भी इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। आज का कैंप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आज का जो ये कैंप था उसमें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा मैनेजमेंट मेरे 9th और 10th के बच्चों ने ही किया था, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा गर्वित हूँ और मैं शायद चाहता भी यही था। आप देख रहे हैं नीति न्यूज़।